Hello, everybody, and welcome back. Uh, in this lecture today, we are going to talk about A Prayer for My Daughter by Yeats. Just a minute. A Prayer for My Daughter 1919 में ये लिखी गई थी जैसे ही डब्ल्यू बी येट्स की बेटी एन येट्स was born, and it was published in 1921 in Michael Rubatis and the Dancer. पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन ऑफ कोर्स उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके बैकड्रॉप में ही लिखा इन्होंने वर्क एंड द आयरिश सिविल अनरेस्ट आयरिश स्पेशली आयरलैंड बिकॉज येट्स का कनेक्शन वहाँ से है ही वाज आयरिश सो आयरिश सिविल अनरेस्ट का जो बैकग्राउंड है इट वाज वेरी मच देयर विच इन्फॉर्म्स द पोम्स एंग्जाइटी अबाउट वायलेंस अब जब अपनी एक बेटी को आप एक अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहे हो यू आर वेरी एंशियस अबाउट द वर्ल्ड दैट यू आर ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड which is full of so many negative things, so much violence, so much instability, so much decay. तो उसी का कंसर्न लेके येट्स ने ये वर्क लिखा. इट इज अ मेडिटेटिव प्रेयर जिसमें येट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की दुनिया में मैं अपनी बेटी को ला रहा हूं और क्या वैल्यूज वो इनहेरिट करेगी. और वो आर्टिकुलेट कर रहा है अपना होप कि आई विश आई होप आई प्रे कि वो मॉरल इमोशनल इंटेलेक्चुअली अच्छा डेवलप करे. He is not wishing for beauty or power. He is wishing for values, inner harmony, inner peace उसमें रहे, ह्यूमिलिटी रहे और रूटेडनेस रहे. हवा में उड़ ना जाए कहीं, रूटेडनेस रहे. Ottawa Rima में इन्होंने लिखा है ये, which is 8-line stanza, same form as Sailing to Byzantium. And the controlled stanzaic form contrasts with the storm imagery. Storm की imagery है वर्क में और जो stanza का form है वो बिल्कुल contrasting उसमें है उस स्टॉर्म से, सिंबलाइजिंग द पोएट्स अटेम्प्ट टू इम्पोज ऑर्डर ऑन केओस कि जैसे दुनिया में तो इतना केओस है लेकिन हमारे अंदर पीस हो तो काफी रहेगा. तो ये उन्होंने अपने स्टैंजा के फॉर्म में भी ये लेके आए हैं अपने थॉट को. पोम शुरू होती है ड्यूरिंग अ वायलेंट स्टॉर्म symbolizing political turmoil and historical instability. The infant sleeps peacefully in her cradle, representing innocence and vulnerability amidst disorder. ठीक है, तो एकदम वायलेंट स्टॉर्म आया हुआ है बाहर और जो छोटा-सा बच्चा है वो सो रहा है अपने क्रैडल में, जो इनोसेंस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो इनोसेंस और प्रोटेक्शन का थीम है, ब्यूटी और उसके डेंजर्स क्या होते हैं, हेट्रेड और इंटेलेक्चुअल रिजिडिटी, दिस इज़ ऑल्सो अ थीम, कस्टम एंड सेरेमनी जब वो आइडलाइज़ करते हैं ट्रेडिशन को, सोशल कंटिन्यूटी को, सेरेमनी को, जो हमें स्टेबल करती हैं चीज़ें. तो ceremony, customs, inner harmony and courtesy is another theme. येट्स का विजन देखते हैं. येट्स की आइडल woman is not passive but balanced and self-contained, who is capable of generosity without bitterness and intelligence without fanaticism. So his prayer reflects a conservative ethical vision which is shaped by disillusionment with modern politics and revolutionary violence. Hmm? I will take you to the poem now. One, once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and cover lid my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's Wood and one bare hill whereby the haystack and roof leveling wind, bred on the Atlantic, can be stayed. And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. I have walked and prayed for this young child an hour and heard the sea wind scream upon the tower and under the arcs of the bridge and scream in the elms above the flooded stream, imagining in excited reverie that the future years had come, dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. तो क्या कह रहे हैं, वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग, एक बार फिर से स्टॉर्म जो है वो बहुत सिंबॉलिक है, लिटरल स्टॉर्म भी हो सकता है ऑफ कोर्स बट आल्सो वेरी मच मेटाफोरिकल व्हिच सजेस्ट्स द डीके इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड वॉर वन के बाद जिस तरह का हालत था
That is also another kind of a storm. So the poem opens with a violent storm, suggesting political and moral chaos in the world. इसके कॉन्ट्रास्ट में येट्स का इन्फेंट डॉटर जो है वो सो रही है बहुत पीसफुली अंडर दिस क्रैडल। क्रैडल पता है ना, वो जो झूला सा होता है क्रैडल, उसमें वो सोई हुई है, उसका लिड भी कवर्ड है। माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। कॉन्ट्रास्ट देखो ना, बाहर स्टॉर्म और यहाँ पे वो इतना आराम से सो रही है, उसको कोई पता नहीं है। इन अ सेंस there is no obstacle but Gregory's Wood and one bare hill, whereby the haystack and roof leveling wind, bred on the Atlantic, can be stayed. Storm is shown and almost as unstoppable, and checked only slightly by natural barriers. अभी जो Atlantic wind है, it suggests vast, uncontrollable historical forces. तो storm तो unstoppable है, storm के लिए कोई obstacle नहीं है, लेकिन ग्रेगरी का वुड, व्हाट डज दैट मीन? सिर्फ नेचुरल बैरियर्स हैं। हम कहते हैं जंगल मत काटो, क्यों? जंगल बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट करते हैं, बहुत जंगल है, तो एक बहुत बड़ा स्टॉर्म को भी वो एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा ना, इतने सारे ट्रीज होंगे। एंड वन बेयर हिल, और एक हिल भी है, वेयर बाय द हेस्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रेड ऑन द अटलांटिक कैन बी स्टेड, वहां पे वो थोड़ा रुक सकती है। So the Atlantic wind suggests vast, uncontrollable historical forces, war, revolution, and social upheaval, which is threatening domestic safety. And for an hour, I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. अब 1 घंटा हो गया और मैं बस वॉक कर रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ग्लूमी है सब कुछ, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म आउटसाइड, द केओस आउटसाइड, मेरे दिमाग के अंदर भी वो चल रहा है। Anxiety about the future world that his daughter must face. Second stanza में I have walked and prayed for this young child an hour. 1 घंटे तक मैं इस बच्ची के लिए प्रे कर रहा हूँ, and heard the sea wind scream upon the tower. मैं सुन रहा हूँ सी विंड को जो टावर के ऊपर सुनाई दे रही है, एंड अंडर द आर्क्स ऑफ द ब्रिज, मतलब हर जगह से अलग अलग तरह का। अब ये जो स्टॉर्म है, अगेन ये जो विंड है, ये भी मेटाफोरिकल हो सकता है ना, कि यहाँ से भी, यहाँ इस तरफ देखो तो यहाँ भी केओस है, उस तरफ देखो तो वहां भी केओस है। इन द elms above the flooded stream. So the repetition of walking and praying reinforces poets' obsessive concern. Storm's sound is amplified through architectural and natural spaces, suggesting that no part of life is untouched by violence and unrest. Right? टावर के ऊपर देख लो, ब्रिज के नीचे देख लो, हर जगह से आ रहा है आवाज। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। अब जो पोएट का एंग्जाइटी है वो इमेजिनेटिव हो जाता है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को इनटू द फ्यूचर, इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, मतलब मैं फ्यूचर में पहुंच गया हूं। इन्विजनिंग वो कौन सी किस तरह की दुनिया होगी जिसमें मेरी बेटी होगी। डांसिंग टू अ फ्रेंजीड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। फ्रेंजीड ड्रम क्या है? फ्रेंजी इज लाइक पागलपन टाइप, तो इट इवोक्स वॉर, रेवोल्यूशन एंड मॉब वायलेंस। उसी का पैराडॉक्सिकल फ्रेज है मर्डरस इनोसेंस, सजेस्ट दैट जो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, दे ऑफन अपीयर नेचुरल, जस्टिफाइड और इनएविटेबल, जस्ट लाइक द सी। ठीक है, दोबारा देखो। Dancing to the imagining in excited reverie that the future years had come. Future years किस तरह के हैं? Dancing to the frenzied drum, मतलब फ्यूचर की दुनिया में हर तरह का वो frenzied ड्रम बज रहा है, वॉर है, वायलेंस है, एवरीथिंग out of the murderous innocence of the sea. Third stanza, may she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught, or hers before a looking glass for such being made beautiful overmuch, consider beauty a sufficient and lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. अब ये अपनी प्रेयर बता रहे हैं, अपनी विशेस बता रहे हैं, that may she be granted beauty. ठीक है, he does not reject beauty, ठीक है, may she be beautiful, but and yet not beauty to make a stranger's eye distraught. Excessive beauty attracts what? Obsessive kind of attention also. कुछ क्रेजी तरह के लोग भी तो मिल जाते हैं कभी कभी, तो वैसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड इट ऑल्सो ब्रीड्स नार्सिसिज्म इन वन सेल्फ, अपना आप भी हवा में हो जाता है फिर इंसान का। So Yeats sees both as dangerous.
So beauty to make a stranger's eye distraught or hers before a looking glass for such, कि अपने को ही बस देखती रही शीशे में और अपने को ही वो नार्सिसिज्म वाला पर्सनालिटी डेवलप कर ले, ऐसा नहीं चाहिए. Being made beautiful over much, consider beauty a sufficient end. Those who have extreme beauty, उनको लगता है कि बस मैं तो नूर जहां खूबसूरत हूं, अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. दे विल कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, ऐसा नहीं चाहिए. Lose natural kindness and maybe the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. So overvaluing beauty से kindness भी चली जा सकती है. Some people are not kind. Beautiful people sometimes are not kind because they have extreme pride in themselves, and the ability to form deep honest emotional bonds also they lack. So without the moral discernment and emotional intimacy, what kind of life will she lead? सच्ची दोस्ती भी उसको नहीं मिल पाएगी. Next stanza में Helen being chosen found life flat and dull and later had much trouble from a fool. Yeats Helen of Troy की बात कर रहे हैं as an example of destructive beauty. तो कह रहे हैं उसकी जो beauty थी, it makes her a passive object of desire and it leads to suffering and war. She was beautiful. तो उससे क्या हुआ? Helen became an object of desire और उससे suffering आई, war हुआ. While that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way. So this refers to Aphrodite, who was born from the sea foam. Her lack of parental restraint symbolizes unchecked freedom and desire. एक तो हेलेन का इन्होंने allusion दिया हमें, दूसरा क्वीन एफ्रोडाइट जो फोम से बाहर आई, fatherless, could have her way. Unchecked freedom. Yet chose a bandy-legged smith for man. So Aphrodite का choice कौन था? Hephaestus, a physically flawed god, and which is very ironic. अगर आप देखो, you all have heard about Aphrodite, right? The goddess of love, she was extremely beautiful. मतलब लड़ाई हो जाती थी कि कौन ज्यादा सुंदर है. तो एफ्रोडाइटी का रोल इन ट्रोजन वॉर, इफ यू रिमेंबर, क्या हुआ था? डायरेक्टली शी इज डायरेक्टली कॉज्ड इट बाय प्रमोटिंग ट्रोजन प्रिंस पेरिस, द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन हेलेन. उसने, इट वाज ऑल एफ्रोडाइटी हु डिड दिस. उसने कहा ठीक है, तुम्हें सबसे खूबसूरत औरत मिल जाएगी, हेलेन, इन एक्सचेंज फॉर व्हाट? विनिंग द जजमेंट ऑफ पेरिस. पेरिस ने कॉन्टेस्ट रखा था कि सबसे सुंदर कौन है, ब्यूटी को कॉन्टेस्ट था, leading to Paris abducting Helen and sparking the Greeks' war. Now, throughout the war, she sided with the Trojans. So, both the gods were also involved in that war, and they had taken sides, projecting her favorites like Paris and her son Aeneas, even intervening on the battlefield to save them from death, though she was wounded by Diomedes and rebuked by Zeus for interfering. It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone. So, the metaphor, it suggests that जो beauty है without wisdom leads to eccentricity. तो अभी beauty pageants जो हैं, इसमें beauty with brains होता है. They also have to talk. So, ये वही कह रहे हैं कि beauty without wisdom leads to eccentricity, emotional imbalance and poor judgment, whereby the horn of plenty is undone. Horn of plenty, abundance and fulfillment. Excessive beauty आपकी लाइफ को एनरिच नहीं करती, बल्कि लास्टिंग हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देती है. नेक्स्ट stanza. In courtesy, I'd have her chiefly learned. अब वो बता रहे कि मैं क्या चाहता हूं अपनी बेटी के लिए. Hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool for beauty's very self, has charm made wise
And many a poor man that has roved, loved, and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. बहुत अच्छा स्टैंजा है। कहते हैं इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न इट। मैं ये चाहूँगा कि उसकी जो असली वर्च्यू हो वो ये हो कि शी मस्ट बी लर्न इट। एक तो कर्टसी होनी चाहिए उसमें। इन कर्टसी वो अच्छी हो। So this signifies grace, consideration for others, moral refinement rather than mere politeness. Hearts are not had as a gift. Hearts कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मिल जाएगा गिफ्ट में। आपको दिल जीतने पड़ते हैं, अर्न करने पड़ते हैं by those that are not entirely beautiful. कोई बहुत सुंदर भी ना हो तो भी चलेगा। Often develop kindness and understanding, which enable deeper emotional connections. Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise. तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो कभी कभी विजडम में भी मच्योर हो जाती है। That have played the fool for beauty's very self has charm made wise, though this is the exception rather than the rule. And many a poor man that has roved, loved, and thought himself beloved. तो ये जो इमेज है इट सजेस्ट्स इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड ह्यूमन टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ डिसेप्शन इन लव। Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise. जो फूल प्ले करते रहे अपनी लाइफ में दे हैव बिकम वाइज। बहुत से पुअर मैन, मेनी अ पुअर मैन दैट हैव रोव्ड, लव्ड एंड थॉट, जिन्होंने ये सब किया and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. Genuine kindness rather than beauty, it commands lasting attention and affection. तो Yeats reinforce कर रहे हैं यही thought, यही belief को अपनी emotional generosity में। It should be the base of love. May she become a flourishing hidden tree, that all her thoughts may like the linnet be, and have no business but dispensing round their magnamities of sound. अब ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफर। सो मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री। हिडन ट्री, इनर ग्रोथ, मॉडेस्टी, मतलब वो कोई बहुत लाइमलाइट में ना हो, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसी है वैसी है, कोई बात नहीं, हिडन ट्री भी चलेगा। हु हैज पीस, हु हैज मॉडेस्टी, स्टेबिलिटी, that all her thoughts may be like the linnet bee. Linnet songbird होता है। क्या हो गया? This is linnet. It's a songbird. ठीक है, तो वो कह रहे हैं उनके उसके थॉट्स भी उस लिनेट की तरह हो। Just a minute, please. I have to take this. Hello? ठीक है, तो उसके लिनेट की तरह उसके थॉट्स हो, जो स्पॉन्टेनिटी, नेचुरल जॉय उसके थॉट्स में हो, एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नानाइमाइट्स ऑफ साउंड। उसका जो माइंड हो इट शुड नेचुरली ऐसी होनी चाहिए, वो सॉन्ग बर्ड सॉन्ग की तरह, विदाउट एनी सेल्फ कॉन्शियसनेस और कैलकुलेशन, जो उसके मन में है वो बोले। नॉर but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel. Conflict or desire should arise only playfully. कोई bitterness या cruelty के साथ कभी भी उसका कोई काम ना हो। और may she live like some green laurel. Laurel क्या सिग्निफाई करता है? विक्ट्री, ऑनर, ऑनर के साथ वो रहे, पोइटिक अचीवमेंट, rooted in one dear
परपेचुअल प्लेस, एक जगह रूटेडनेस रहे उसकी, इमोशनल स्टेबिलिटी रहे, ट्रेडिशन उसको पता हो। तो येट्स वैल्यूज कंटिन्यूटी एंड परमानेंस ओवर रेस्टलेस एम्बिशन। My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there's no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. ये कहते हैं अब अपने तरफ जा रहे हैं डब्ल्यू बी येट्स और कह रहे हैं कि अ, जो मैं इमोशनली कनेक्टेड रहा हूँ दैट आई हैव लव्ड द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड दे हैव नॉट प्रॉस्पर्ड मच इट्स ड्राइड अप ऑफ लेट तो ही सेज उसका जो आइडियल्स हैं इंटेलेक्चुअली एस्थेटिक दे हैव ब्रॉट लिटिल सक्सेस और पीस yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. Despite his disappointments, Yeats को ये पता है कि hatred as the greatest is the greatest moral danger. मतलब कोई आपको इतनी नफरत करे, you'll be choked with that hate. Hatred क्या करता है? आपकी पर्सनल हैप्पीनेस भी डिस्ट्रॉय करता है और सोशल हार्मनी भी. So if there's no hatred in the mind, assault and battery of the wind, तो जो स्टॉर्म है दोबारा से आ जाता है वापस, लेकिन अब सिंबॉलिकली। तो अगर मन में कोई भी हेट्रेड ना हो, कोई विंड का वो ना हो, असॉल्ट या बैटरी ना हो ऑफ द विंड, कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। तो लिनेट वापस आ जाता है। लिनेट विल ऑलवेज बी देयर, इनर पीस विल ऑलवेज बी देयर, इट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। And intellectual hatred is the worst. So let her think opinions are accursed. अब ये कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, hatred rooted in rigid opinions is more destructive than emotional anger because it justifies cruelty as moral certainty. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? So plenty's horn again, plenty's abundance, beauty and promise. Yeats refers obliquely to real or maybe symbolic figures who possessed great potential. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn because of her opinionated mind barter that horn and every good rigid beliefs? मतलब आई हैव सीन ही सेइंग कि मैंने भी ऐसी बहुत सारी वुमेन देखी हैं जिनके पास सब कुछ था, प्लेंटी था, प्रॉमिस था, अबंडेंस था, लेकिन उनके ओपिनियनेटेड माइंड की वजह से वो जो हॉर्न है, प्लेंटीज हॉर्न, barter that horn and every good. Rigid beliefs led to what? Rejection of happiness, generosity, and harmony. By quiet natures understood for an old bellows full of anger wind. So, कहते हैं, because of our opinionated mind, barter that horn and every good, by quiet natures understood for an old bellows full of angry wind. आइडियोलॉजिकल रेज को इक्वेट किया है एम्प्टी नॉइज के साथ। पैशनेट हेट्रेड क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस साउंड एंड फ्यूरी बट नो लास्टिंग वैल्यू। तो ये पूरा 3-4 लाइंस जो हैं स्टैंजा की वही है। फिर से पढ़ते हैं कि बाकी इमोशनल हेट्रेड तो चलो हो गया कि somebody hates you because you did something emotionally bad with that person, that is bad। लेकिन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड और भी ज्यादा गंदी है बिकॉज वो आपको खा देती है अंदर से। So let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn because of her opinionated mind barter that horn? वो जो हॉर्न था उसके पास वो चला गया, बार्टर कर दिया। एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। नेक्स्ट stanza, considering that all hatred driven hence the soul recovers radical innocence। तो येट्स प्रपोज करते हैं, एक मिनट, हाँ,
Hmm. Considering that all hatred driven, hence the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self delighting, self appeasing, self affrighting, and that its own sweet will is heaven's will. Okay, and thinking about all of this, considering all of these things, कि जितनी भी हेट है, चाहे इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, having been sent away, all hatred driven, hence the soul recover radical innocence. Soul जो है, it becomes radically pure again. And finally, it realizes that it is self sufficient, self, uh, it's happy, it's peaceful, and it is okay. So, considering that all hatred driven, hence the soul recovers radical innocence and learns that at last it is self delighting, self appeasing, self affrightening, and that its own secret will is heaven's will. सोल ये भी सीख जाती है कि ये जो प्योर विल है, जो वो कहाँ से आती है? ऊपर से. She can, though every face should scowl and every windy quarter howl or every bellows burst, be happy still. My daughter, he says, Yeats says, my daughter, even if all people frown and the winds howl everywhere or every bellows break, कैन बी हैप्पी नॉनदलेस. कुछ भी हो जाए आसपास, चाहे लोग फ्राउन कर रहे हैं, चाहे विंड्स हाउल कर रही हैं, चाहे बाहर स्टॉर्म है, तुम फिर भी खुश रह सकती हो. And may her bridegroom bring her to a house where all the accustomed, ceremonious, and arrogance, for arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares. तो ये लास्ट में ये प्रे करते हैं कि जो मेरी बेटी का हस्बैंड होगा, उसको ऐसे घर में लेके जाए जहाँ पे एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड सेरेमनी, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड हो. फॉर फीलिंग्स ऑफ सुपीरियोरिटी एंड जो ये इल विल है, दे आर सोल्ड इन द स्ट्रीट्स, ये तो हर जगह है. हाउ बट इन custom and in ceremony are innocence and beauty born. Ceremony is a name for the rich horn, and custom for the spreading laurel tree. How else? Oh, st- कह रहे हैं और किस तरह से वो खुश रहेगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुश रखेंगी उसको. ट्रेडिशन, ऑर्डर, रिस्पेक्ट, तो ये चीजें हैं जो प्योरिटी भी लेके आएंगी और ब्यूटी भी क्रिएट करती हैं. सेरेमनी कहते हैं इज द नेम फॉर अ रिच हॉर्न, मतलब एक रिच नेचर, रिच बाउंटी ऑफ नेचर. एंड कस्टम इज द नेम फॉर द ग्रोइंग लॉरेल ट्री. उसी से आपका अच्छा लॉरेल ट्री स्प्रेड होगा. तो ये है प्रेयर फॉर माय डॉटर. बहुत अच्छी है, बेटी के लिए टेंशन में है. वो स्पीकर इमेजिन्स दैट जो वुमन है, द जो स्पीकर है वो इमेजिन कर रहा है द वुमन ही होप्स हिज इन्फेंट डॉटर will become someone who's pretty, yes, someone who's independent, someone who's also intelligent, but in सबके साथ someone who's very pleasant and obedient also. His prayers reflect both his hopes for his daughter and his take on womanhood also in general. ठीक है? Just go through the poem once again. Prayer for my daughter. सबसे पहले इंटरनेट कुछ he's contrasting the storm with the innocence of the baby. Storm is raging once again, and it is the baby is covered in the cradle. She sleeps, and there's nothing apart from the nearby forest. It's called Gregory's Wood, that can stop the strong wind, which destroys haystacks and
the roofs as it blows in from the Atlantic Ocean. And for 1 hour, I've been walking around, I've been praying that because of the deep sadness that I have in me, I've been walking and praying, he again says, for my young daughter for an hour. And as I've done so, I've heard the screaming sound of the ocean winds. I've heard the sounds of the wind which blows above the tower and everywhere around. So, everywhere there is this sound. Underneath the curves of the bridges and through the elm tree. So, I've eagerly imagined, he says, just like a daydream, that the future is already here, which is dancing to the wild drum arising from the harmful yet blameless ocean. And then he says, I pray that my daughter will be beautiful, but not so beautiful that she drives others mad. Not and अपने आप को भी पागल कर दे मिरर में देख देख के. For those who are made too beautiful, think that that beauty is something to be pursued for its own sake. They lose their kind nature. They lose the ability to be truly intimate. They will not be able to form very good friendships. Also, Helen of Troy who was chosen to be king's wife found life with him very boring. And later she suffered at the hands of her lover, who was Paris, a foolish man. And Aphrodite, who was born in the ocean's waves or from the ocean, had no father and could have chosen any man. Yet she chose whom? Hephaestus, who was a crippled blacksmith, a crippled god, as her husband. So, without a doubt, beautiful women waste the gift of their natural beauty by doing crazy things. So he says, I would have my daughter educated mainly in manners and civility. Other people's affection isn't something that you've given like a gift. Heart will not be received as a gift, but rather it is something that you have to work for, and that's how you will earn it. Even so, many people who have acted foolishly in the pursuit of beauty have um, later been made wise by a woman's charming manners. And many poor men who have roamed about, loved, and felt loved by others are attracted to a woman by simple acts of kindness. So I pray that my daughter becomes a prosperous tree that is hidden from view. I hope her thoughts are like that, um, like the finch, interesting only in sharing their generous, pleasing sounds with the world. Linnet ki tarah. I hope she only chases after things or argues as a kind of silly joke. So, oh God, let her live like a green laurel tree standing forever in a single precious place. Laurel tree ki tarah. My mind, my mind, he says, because the minds I have loved and the kind of beauty I have been attracted to, they come from nothing. They come to nothing. They have recently gone dry. Sub beauty fades. We all know that. Nonetheless, I know that being full of hatred may be the worst of the evils. If a mind is free of hatred, then the destruction of the wind can never rip the finch from a tree. And the worst kind of hatred is the one that originates in the mind. So let my daughter think that opinions are something to be avoided. यहाँ पे of course people will say why you have to be opinionated, but चलो जो इसने कहा है वो we have to speak about that. And he says, have I not seen the most beautiful women ever born out of nature's rich abundance, due to their opinions, trade their natural blessings and everything that quiet, sensitive people would consider good for an old angry man? छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ and they've become foolish. Thinking about all of this, all the hate having been sent away, the soul becomes radically pure again and finally realizes that it is self-sufficient. ये हमने बात कर ली. Okay, that's it. You can go through the poem once again, line by line. Simple है. ठीक है? See you.